गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो है ट्रेंड एनालिसिस की बेसिस पे। ट्रेंड एनालिसिस जो है चैप्टर नंबर 3 है SYBCOM का। वैसे तो ये चैप्टर और ये टॉपिक हर कोर्स में यूज़फुल है, बस स्पेशली आई मेड दिस वीडियो फॉर SYBCOM। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रेंड एनालिसिस? सो ट्रेंड एनालिसिस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट ईयर है उसको ट्रीट करते हैं कि वो बेस ईयर है, और उसको फिर कंपेयर करते हैं, करंट ईयर को कंपेयर करते हैं बेस ईयर से, which those of the year are to ascertain the trends in the future. तो trend analysis of the sales reveal whether as compared to base year, that is year 1, year 2, the sales shows a trend of increase, for example, or decrease in the subsequent year. Suppose for example 2015, 16, 17, तो 15 जो है स्टार्टिंग का ईयर मैं उसको कंसीडर करूँगी एज अ बेस ईयर। अब 16 का मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं 16 को जो वैल्यू है उसको डिवाइड करूँगी 15 की वैल्यू से इंटू 100, तो मुझे 10% मिल जाएगा 2016 का। सेम वे अगर 17 का कैलकुलेट करना है, देन इन दैट केस आई विल डिवाइड द वैल्यू ऑफ 2015 से, तो आई विल गेट 2017 का। On the other hand, trend analysis involves the collection of information from multiple time periods and plotting the information on a horizontal line for future review. Actually, it's a graphical representation so that it is very easy for anyone can find out the trend. So the intent of this analysis is to spot actionable patterns in the presented information. Okay, after this uses, the trend analysis is useful because trend shows the direction either upward or downward of the changes. ऊपर गया मतलब पॉजिटिव है, प्रॉफिट होगा, नीचे जा रहा है डाउनवर्ड है, दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव एंड इट लीड्स टू लॉस। तो ट्रेंड्स आर ईजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट and it is very quick method of analysis because it's a graphical representation। तो आप ग्राफ को दिखकर समझ सकते हो, अगर वो ऊपर जा रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, so it is very easy, and अगर नीचे जा रहा है that means loss। So that's why it is called as a quick method of analysis. It is more accurate because it is based on percentage and not absolute figure। तो ये परसेंटेज में होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। Trend analysis. This means that an exploitation of a historical time series will not necessarily yield a valid prediction of the future. Thus, a considerable amount of additional research should accompany trend analysis when using it to make prediction. So, ट्रेंड एनालिसिस में बेसिकली अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो ट्रेंड एनालिसिस जो होता है उसमें हम करंट सिचुएशन को पास्ट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं, दैट्स इट। अब इसको क्यों बोला गया है कि ये बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि ये परसेंटेज में आता है तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होता है, और ये क्विक मेथड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको यूजुअली ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एनी वन कैन चेक, इवन इलिटरेट पर्सन ऑल्सो, कि हाँ ऊपर जा रहा है तो उसको समझेगा कि प्रॉफिट होने वाला है, अगर नीचे आ रहा है तो वो भी समझेगा कि हाँ यहाँ पे लॉस है। द सेम सिचुएशन इज़ रिस्की, बेटर नॉट टू एंटर इन दैट मार्केट। सो ये वाला जो है यहाँ पे इसको मैनेजर्स भी यूज़ करते हैं, प्लस इसको स्टेक होल्डर यूज़ करते हैं for example like an investor use, and with the help of this investor track the or predict the future condition also, so that they can make a quick decision कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर ऊपर जा रहा है तो आपको खुद समझ सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है, ईजीली आप समझ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डाउनवर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन कैसा है, रिस्की है। इफ़ यू आर विलिंग टू बेयर द रिस्क यू कैन, or else if you are afraid of risk, so that you can quit and wait for the right moment when the graph will go up, in that case you can go for the investment. So these are the uses of trend analysis. Trend analysis is used by the various manager, various stakeholders. Many people use this to analyze the future prediction or to predict the future. So trend analysis work very effectively in the businessmen use as a key. This trend analysis is a kind of or a method in technical analysis that helps in predicting the future movement, and that is based on the current ongoing trend data.
Trend analysis gives an idea to the trader based on what has happened in the past and what will be happening in the future. So there are mainly three types of trend. One is a short, second one is long term, and third is intermediate. These are the three types. Next topic is advantages of trend analysis. So trend analysis helps in analyzing the growth in the financial activities of the firm at a glance. At a glance means future में क्या होगा वो इससे पता चलता है. So that's it is the advantage. Second is graphical presentation of trend lines the management to take a quick decision and concerned issue. If they find it any shortfall or something, they can make the changes as and when it required. After that, trend values also help the management in the controlling process as well. सपोज अगर बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. तो ट्रेंड एनालिसिस प्रूव्स to be very useful for looking rational investment decision. As I said कि traders क्या करता है, उसकी help से traders can enter long position anytime whenever they want, so that this is useful. Like a trader can enter a long time position when a particular stock is trading up or down, while strong momentum and square of long positions when the stock loses momentum. So trader can use the relative strength index is used in this strategy. Okay. After that, next is moving averages. क्या होते हैं? तो traders can enter long position when a short term moving average cross above a long term moving average and vice versa. After that, indicators help in simplifying price of information and also provides with trend or trade signals or reversible signs. So trend analysis is a method in technical analysis that helps in predicting the future. Movement of that is based on the current ongoing trend data, and there are mainly three types of trend. If somebody asks you how many, so there are three. First one is a short, which is meant for the short period of time, and the second one is a long term, and intermediate is a medium one. So trend analysis helps in traders to make a profit when they trade along with the trade and not against it. So trend analysis helps in predict a trend, whether the market is in bull or bearish run, and it is also suggest whether a trend reversal is going to take place, from a bull to bear market or vice versa. So traders should combine indicator strategies, or they can come up with their own strategies. So entry and exit criteria can be clearly established for traders. अब ये बुल और बेरिश मार्केट्स होते हैं जिसमें जो है ट्रेडिंग किया जाता है. एक्चुअली trend analysis play very important role, as I said, in making what quick decision. Whenever the person want to take a decision, वो क्या करता है, trend analysis को follow करता है. तो trend analysis involve collections of information from multiple time periods like 3 years, 4 years, and plotting the information on a horizontal line for future review. So the intent of this analysis is a spot actionable pattern, and which is useful for the various stakeholders and directors, on joint directors, many of them. So trend analysis is key, I can say, for the people, like for the investors. They can easily find what's going on in the market. According to that, they track the scenario and they take that decision. So trend analysis basically refers to the process of collecting from multiple different periods, sometimes referred to as time series data, or sometimes it's like a year. So investors sometimes they use trend analysis method to predict changes in the price of stock.
Trend analysis can be also be used as a predictor for the entire stock market, as well as for working out whether a transaction from a bull market to a bear market or vice versa, because investors are more likely to make a profit when moving with a trend rather than against it. So trend analysis can be especially helpful within the field of investment. And trend analysis of financial statement can help you uncover trends and inconsistencies within your company. For example, a spike in expenses in one period followed by a decline in the next year, so may indicate that you may have accidentally booked the expenses two times in the previous month. Because it's such a great way to catch mistakes, trend analysis methods are often used to examine preliminary financial statements so that you can make any necessary changes before releasing them more widely. So there are several advantages, like measure financial performance. So using trend analysis method to measure the financial performance of your organization over a specific period of time can help you make better decision regarding the future of the company. If you spot any issue or potential concern regarding the future financial health of your business, so you can alter your company process to head them off at a source. Next is like one of the other key trend analysis benefit is the ability to cart a comparison between your business and a competitor business. तो आप इसके मतलब अपने बिजनेस को आप कॉम्पिटिटर के साथ में फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें क्या डिफरेंसेस है. आफ्टरवर्ड यू कैन कम आउट विद दोज डिफरेंसेस. नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो एनालाइज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सो ट्रेंड एनालिसिस कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिशन, while it may also help you to measure the long-term solvency of business. In addition, you can use trend analysis of financial statement to measure your company profitability over a certain period of time. So trend analysis, as I said, is a best indicator और बेस्ट प्रिडिक्टर जो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है हमारे फ्यूचर के चीज़ों को. तो अंडरस्टैंडिंग हाउ द पास्ट अफेक्ट्स द फ्यूचर इज़ अ की ऑफ स्किल ऑफ बिजनेस ओनर. इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट क्यों अफेक्ट कर रहा है फ्यूचर को, विच इज़ वाई इट मे पे टू एक्सप्लोर ट्रेंड एनालिसिस मैथड. सिमिलरली टू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और कैश फ्लो फॉरकास्टिंग, ट्रेंड एनालिसिस यूजेस व्हाट हिस्टोरिकल डेटा. ये सब पास्ट के डेटा को यूज़ करते हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड प्रोजेक्ट फ्यूचर. इवन लास्ट ईयर ये था तो अभी नेक्स्ट ईयर कितना होगा, इसकी हेल्प से हमको पता चलता है. सो यहाँ पे मैंने उन्हीं को समराइज़ किया है एडवांटेजेस को. यहाँ पे मैंने लिखे हैं, फर्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग द ग्रोथ इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ फार्म एट ग्लांस, मीन्स इन फ्यूचर. Second is it's a graphical presentation of trend lines, the management to take a quick decision, the concerned issue. Then trend values also helps the management in controlling the process as well. The trend analysis proves to be very useful for tracking rational investment decision. Next topic is disadvantages. So first disadvantage is choice of base year and number of year. हाँ, यहाँ पे choice दी होती है. So this is a biggest disadvantage. Second is different accounting policies. मतलब एक ही चीज़ को find out करने के लिए आप number of accounting policies होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. Like X भी यूज़ कर सकते हो, X policy भी, Y भी, Z भी. That's why. So when conducting trend analysis and making decision based on your finding, it's important to remember that trend analysis predictions are never 100% accurate. It's also true that while past events are generally indicative of the future, this isn't always or in case. As such, it's important to cast a critical eye over your trend analysis results and only take actions if you are sure that your reading of the market is accurate. So these are the disadvantages or these are the limitations of trend analysis. So जहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं
इसके एडवांटेजेस है, वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो मैंने यहाँ पे समराइज़ किए हैं। सो अगर डिसएडवांटेजेस के क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस ट्रेंड एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो दीज आर द ट्रेंड एनालिसिस डिसएडवांटेजेस, दिस टू। फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ द BCOM. Second is what different accounting policies used. This is also next limitation I can say कि any one trend by itself is not very analytical and informative. If interpretation has to be done on percentage and ratio is isolation and not along with the obsolete data, so from which the percentage have been derived, the interferences tend to become baseless. The comparatively of trend percentage is unfavorable affected when accounts have not been drawn on a consistent base year after a year and when the price level is not constant. So during the inflation period, the data over a period of time becomes incomparable unless the absolute rupee data is adjusted. So there is always the danger of selecting the base year, which may not be representative, normal and typical if trend percentage calculated for itself having no logical relationship with one another tend to be meaningless and unscientific. Though the trend percentage providing what significant information and undue importance and emphasis should not be able to lay down on the percentage when there is a small number in the base year. In such case, even a slight variation will be magnified by the percentage change. So while calculating this trend, you have to be very alert and there should be a consistency in the principle and practice followed by the organization throughout the period for which analysis is made, and the base year should be normal, that is representative of the item shown in this statement, and the trend percentage should be calculated only for the item which are having logical relationship with each other. अगर illogical relationship है तो हम नहीं कर सकते हैं. And figures of current year should be adjusted in the lights of price level changes as compared to the base year before calculating what trend percentage. So trend play very important role while predicting the future. अब जो मैं न्यू टॉपिक ले रही हूँ वो है फॉर्मेट. इसका बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, पहले की वीडियो में मैंने शेयर किया है कि एक ही फॉर्मेट है वर्टिकल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. वही फॉर्मेट 4 चैप्टर में हुआ है. तो मैंने जो पहले का वीडियो अपलोड किया, प्लीज़ गो फॉर द रेफरेंस, चेक दैट. इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. अब ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट. इसमें आता है, ऊपर आता है एब्सोल्यूट अमाउंट. ये यूजुअली दिए होते हैं, वही अमाउंट्स हम कॉपी कर रहे हो और कुछ नहीं है. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि सपोज 3 ईयर्स का दिया है, 15, 16, 17, और उसका क्या निकालना है, ट्रेंड मतलब परसेंटेज निकालना है, 15, 16, 17. सो नाउ आई एम टेलिंग यू क्विकली कि इसमें से बेस ईयर कौन सा होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर जो भी स्टार्टिंग ईयर है दैट इज़ ऑलवेज योर बेस ईयर. स्टार्टिंग मतलब अब देखो स्टार्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, लाइक 17, 16 रिवर्स में भी हो सकता है 15. तो उसमें आप बोलोगे 17 एंड नो, जो सब में छोटा नंबर होगा, आई मीन जो स्टार्टिंग नंबर है, छोटा नंबर है, उसको लेंगे. इसमें सबसे छोटा कौन सा, 15 है. तो 15 विल बिकम योर बेस ईयर, 16 इज़ योर करंट ईयर, 17 इज़ योर करंट ईयर. तो अब मुझे 16 का करंट ईयर का निकालना है, तो मैं बेस ईयर से डिवाइड करूँगी, मतलब 2015 से डिवाइड करूँगी इन 200, तो मिल जाएगा 16 का. सेम वे अगर 17 का निकालना है तो मैं 15 से डिवाइड करूँगी इन 200, तो मिलेगा 17 का. अब इसका अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो 2 हाफ्स में होता है. फर्स्ट हाफ होता है सोर्सेज ऑफ फंड, सेकेंड हाफ होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड. अब सोर्सेज ऑफ फंड में यहाँ पे मैंने लिखा शेयर कैपिटल, उसके बाद है डिबेंचर्स. अब ये दोनों को ऐड किया तो टोटल आ जाएगा, उसको मैं डिनोट करूँगी ए से, एंड इट इज़ नोन एज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड. उसके बाद में सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ फंड, सेकेंड हाफ, उसमें आ जाएगा फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल, और लास्ट में आता है कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अब यहाँ पे जो है जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ का निकालूंगी, पहले मेरे को वर्किंग कैपिटल निकालना है. वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो मिलेगा वर्किंग कैपिटल. उसके बाद में
सो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से कट गया है। पॉइंट नंबर 5 के बाद आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको डिनोट करते हैं बी से। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मिलेगा वर्किंग कैपिटल 3 - 4। पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपका दोनों टोटल टैली हो रहा है, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड का कैपिटल एम्प्लॉयड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मीन्स यू हैव सॉल्व करेक्टली। अदरवाइज़ अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स कि आपने कुछ गड़बड़ की है। तो दिस इज़ द की पॉइंट, बाय दिस यू कैन फाइंड आउट वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करूँगी यहाँ पे नीचे, तो इसमें मेरे को कौन सा मैं ऐड करूँगी, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और पॉइंट नंबर 1 + 2 + 5 मतलब वर्किंग कैपिटल। कॉमन सेंस है, मैंने वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट किया है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके। सो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फिक्स एसेट्स को प्लस इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल को ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको डिनोट करेंगे पॉइंट बी से। ओके, so this is the format. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment. Thank you.